Hi gentlemen, good evening. I am Gori Shankar. I am from Gen Robotics. I am here to represent my reputed organization Gen Robotics and its product. So Gen Robotics is robotic startup in India, primarily focus on designing and development of robotic solution to address various social issues facing by our society in sanitation and health. Gen Robotics was founded in 2017. You know, we reached outer space. We touch outer space with the help of technologies, but we still forgot the earth. People are surviving. People are surviving for society. People are surviving in sanitation and health sector. They need some support to help them if some technologies. So we know manual scavenging was banned in 2013. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लॉ पास किया था जिसमें मैनुअल स्क्वेंजिंग को टोटल बैन कर दिया गया था, बट स्टिल कुछ मेजर सिटीज़ में अभी भी मैनुअल स्क्वेंजिंग हो रही है। कोई भी ये काम नहीं करना चाहता। पता है, एक बार मैन होल के अंदर गया आऊँगा या नहीं किसी को भी नहीं पता, कोई भी ये नहीं करना चाहता, फिर भी दे आर सर्वाइविंग फॉर सोसाइटी, दे हैव नो सोल्यूशन। सो वी आर ऑन ए मिशन, a mission manhole to robohole. We are on a mission to eradicate manual scavenging from the country. You know, in every 5 days, as per data, in every 5 days one man lost his life. As per official data, 4.5 million people are still engaging in this job. As per official data, 22,000 to 327 men died in this scavenging sewerage type job. As per official data, 98% men and women are still suffering from fatal diseases. So we want to change their life. So I want to see you, if we use robotic technology, if we use robotic technology, if we compare with a human, then if human is intelligent, if man is intelligent, then robot is artificial intelligent. If man has a vision, then robot has a machine vision. If man has experience, it has a machine learning. If man has a hand, it has a human comparable robotic arm. सेम जैसे हमारा हाथ काम करता है, वैसे रोबोट का हाथ भी काम करेगा। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक स्क्वेंजर, द बैंडिकूट वर्जन 2.0. यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज अ 2 यूनिट. वन इज द स्टैंड यूनिट, द सेंटर पार्ट यू कैन सी, द सेंटर पार्ट, ये जो आपको सेंटर पार्ट दिख रहा है, द सेंटर पार्ट इज अ रोबोटिक यूनिट. द स्टैंड यूनिट विल प्लेस ऑन द मैन होल. The center part, the robotic unit, will dive into the manhole for clean all possible operation. This is the screen you are showing this side. This is a smart user interface. That is a user interface very friendly to understand the robotic operator who can understand easily how to operate this. We use artificial intelligence in this robot. It can identify the objects which कौन सी चीज़ को पहले पिकअप करना है, कहाँ पे स्लज है, कौन सी स्लज पहले उठाना है. It has a human comparable robotic arm. It can work for shoveling, picking and grabbing sludge from the manhole. It can remove the main blockage on the sewer pipe, on the mouth of sewer pipe. It can remove the main blockage because it has a night vision cameras, high definition camera. It can identify where the main blockage is. We provide gas sensor so the operator can take safety precautions. We use robotic technology in this robot. We use very lightweight carbon fiber body, so it will be easy to portable it can easy to portable on every site
एंड देयर विल बी नो ट्रैफिक इंटरप्शन। हम इसको कुछ भी गलीज एरिया में कहीं भी इसको नैरो स्ट्रीट में इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ स्मॉल इज़ वेरी कंपेटिबल। और वी यूज्ड imported quality material. The robot is IP68 waterproof. We use gas sensor. कुछ जो म्यूनसिपैलिटीज़ के पास एक हाइड्रोलिक मशीन रहेगी, जो हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है, ओनली वो सेंटर पार्ट मैन होल का वो क्लीन कर सकता है। But robot can clean the corners of the manhole. It has a robotic arm which can clean the corners of the manhole, and also it can remove the main blockage of the sewer pipe. So here are some key features. There is no human entry. We are following MS-13 Act for that is prohibition for manual scavenging. We following. It has a gas sensor. The robot is made with very lightweight carbon fiber body. It has a gas sensor. We made it with full safety precautions, safety gears. It has a training assistant. The robot is compatible for all type of standard manholes. The lifting capacity of the robot is 125 kg. The diving capacity of the robot is 10 meter. That is customizable. It need only 220 volt power supply. So I want to show you that this is official launching ceremony of Bandicoot version 2.0 by our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and UN Secretary Mr. Antonio Guterres. He was from WHO. Now we are a part of Swachh Bharat mission and Make in India. We implemented in 14 states of India for eradicate manual scavenging like Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Odisha, UP. We implemented, in Indore, we implemented 5 robot, and Indore is a first cleanest city in India. In Surat, we implemented 5 robots. In Coimbatore, we implemented 5 robots. In Bulandshahr, we implemented 5 robots. In Haryana, 13 robots are working. If we own this product, or if we compare with work, if you own this product, then for manual scavenging, अगर एक दिन में 10 मैन होल क्लीन करने के लिए कम से कम 15 मैन पावर का ज़रूरत पड़ेगा, एंड अगर हम 700 ईच को देंगे देन इट विल बी अराउंड 10,500. और सेम थिंग इफ़ वी यूज़ रोबोटिक टेक्नोलॉजी देन ओनली 2 मैन पावर नीड, और अगर 1000 ईच को देंगे तो भी 2000 इट विल बी. सो 500 जो फ्यूल के लिए इनफ होगा. सो एवरी डे you can save 8,000, and after 1.5 year you will your investment will be recovered. So after 1.5 year you will get advantage, you will get benefits, economical benefits. So that is economical impact. Also there is some social impact also. More than 1,700 the manual scavenger now trained to robotic operator, because हमें भी पता है कि सोसाइटी एक सीवर मैन को किस नज़र से देखती है. सो सम जो भी अभी सीवर मैन थे, जो भी रोबोटिक ऑपरेटर बन गए हैं, तो उनके आप फेस देख सकते हो, स्माइल देख सकते हो, क्योंकि कोई भी ये काम नहीं करना चाहता असल में. सम आर वर्किंग फॉर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, some are working for a poor, they need something, they have not anything. कैसे ना कैसे कुछ मेजर सिटीज़ में अभी भी हो रहा है, और हम इनको अगर नहीं चेंज करेंगे तो कौन करेगा. हमारे कुछ स्किल डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं, जन रोबोटिक्स फाउंडेशन द्वारा कुछ स्किल डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं,
तो जिसमें जो सफाई कर्मचारी हैं उनको कुछ ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है, कुछ थ्योरी सेशन दिया जाता है, कुछ प्रैक्टिकल सेशन दिया जाता है कि सेफ्टी गियर्स कैसे लेने हैं, डायरेक्ट टच में नहीं आना, जो क्लीनिंग टाइम के जो वेस्ट में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है, तो अवेयरनेस क्लासेस उनको दी जाती है. So some awards, we got some awards for the Hindu Young Changemaker Award from our honorable president, vice president, and there are also some tweets from Ministry of Housing and Urban Affairs. They appreciate us. This will enable zero human entry. We got Amrut Award for identify and promoting solution for cleaning manhole and eradicate manual scavenging. कुछ ट्वीट्स से हमें अप्रिशिएट किया गया, लाइक अर्बन स्वच्छ इंदौर, स्वच्छ भारत अर्बन स्वच्छ सर्वेक्षण से हमें अप्रिशिएट किया गया. We got National Startup Award 2020. You can see we got National Startup Award. We recognized by Digital India ET Startup Award 2021. Our key customers, there are some our key customers: Indore Municipal Corporation, Surat Municipal Corporation, Coimbatore Municipal Corporation, Bulandshahr Municipal Corporation, Vadodara Municipal Corporation. They are some our key customers. Also Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Indian Oil, Smart Cities. These are some of our key customers. They are we recognized by Amrit, Ministry of Housing and Urban Affairs, Startup India, Smart Cities, and some of our partners are C Fund, Unicorn, India Venture, Startup India, ONGC. ये हमारे कुछ इन्वेस्टर हैं. Now I want to show you a picture. In this picture, the name is Satish. Now he is a robotic operator. इससे पहले ये मैनुअल स्क्वेंजिंग का जो जॉब करता था. So after all, thank you for listening. I would like to question. You can comment in the box. Then thank you.